Okay, I think we are ready to start. Need that little confirmation that the screen is visible. Can someone confirm? Only two of you. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Okay, I'm just going to do a quick recap of what we did last time. Recap. Last time we talked about the weak law of large numbers. And the weak law of large numbers says that that the random variable converges to its mean. What that means is that if there is a random variable, you take many observations. If you take many observations of that and take the mean of those observations, that will converge the mean will converge, mean of those observations will converge to the true mean of that random variable. तो इसी तरह हम किसी random variable का mean find भी कर सकते हैं. The other thing that we talked about last time was the central limit theorem. Central limit theorem, CLT. And the CLT says that if you have x1, x2, all the way up to xn, which are independent, identically distributed with mean, each with mean mu and variance sigma square, okay, then the summation I is equal to 1 to n xi converges to normal, normal with some mean and some variance. हमें पता है कि इसका mean क्या होना चाहिए. With mean, इसका mean होना चाहिए n times mu, and the variance, since these are identically distributed and independent, so this would be n times the variance of each one of them. So the distribution of this guy would be equal to n times mu, mean, and n times sigma square variance in normal distribution. In other words, summation of I is equal to 1 to n xi, उसमें से उसका mean minus कर दें, n times mu mean minus किया और उसकी standard deviation से divide कर दें, which is square root of n times sigma. ठीक है, इससे divide कर दें. This guy would be a standard normal. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक normal है, उसमें से मैंने उसके mean को minus किया है, standard deviation से divide किया है, normalize किया है. So now you have a standard normal distribution. So probability that this guy is less than or equal to some number small z, it will converge to phi of z, where phi is the CDF of standard normal, which is normal 0, 1, standard normal. Okay. So equivalently हमने ये भी define किया था कि equivalently कि if x bar is the average of those, summation of I is equal to 1 to n xi. ये देखें वही चीज है, ये exactly वही चीज है, except कि मैंने n से divide किया, average ले लिया इसकी, बाकी कोई फर्क नहीं है. So expected value of x bar, ये भी हमने show किया था कि ये instead of n times mu, this is divided by n, so this will remain as mu. And the variance of x bar is a random variable. Variance of x bar would be equal to sigma square over n. Okay. So central limit theorem जो है वो क्या कहता है कि एक तो ये कि sum of these xi's this will converge to normal distribution. तो अगर मैं उसको एक कांस्टेंट n से डिवाइड भी कर दूं तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन इसका अपना मीन है और अपनी वेरिएंस है, जो ऑब्वियसली स्लाइटली रिड्यूस्ड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली n और n स्क्वायर के फैक्टर का फर्क है. ठीक है. सो x bar minus the mean of x bar, which is mu, divided by the variance of x bar, which is standard deviation of x bar, which is sigma over square root of n. So this guy is also standard normal. This also is standard
normal, standard normal, or normal 0 1, normal 0 1, mean 0, variance form. ठीक है? So last time I think we did an example. ये हमने एक example भी की थी कि आपके पास you have 60 uniform random variables. Sum of those, what is the probability that the sum is less than 35? ये हमने example last time की थी. We will do a very quick example today as well. So example. Let's say number of students enrolling in a course is S, which is Poisson, which is a Poisson with parameter 100, Poisson lambda is 100. Okay. If agar section ka size jo hai, agar number of students enrolled is greater than or equal to 120, you split the students into two sections because we cannot fit more than 120 students in one class or many other reasons. Okay, so 120 से ज्यादा enrollment हो जाती है तो हम उस section को split कर देते हैं, split into two sections. Okay. And the question is, what is the probability that you will split? So basically I'm asking the probability S is greater than or equal to 120, and S is a Poisson random variable. So this would really be I is equal to 120 से लेके infinity तक Poisson है, infinity हो सकता है, e to the minus lambda, which is 100, lambda power I, which is 100 power I, divided by I factorial. ये हमने Poisson की distribution लिख दी है. This is Poisson distribution and summed it over from 120 to infinity. ये इतनी बड़ी summation कोई कर नहीं सकता. ठीक है, 1 minus करके वो जो टेक्निक लगाएं तो फिर भी आपको would be very difficult. Why? Because you will have to sum up 119 terms. Okay, so hard to find. This is hard to find. इसको compute करना, find तो कर ही लेंगे, but compute करना मुश्किल है. Hard to compute. Maybe compute is the better word. Hard to compute. Okay. So what we do is you consider Poisson 100 as sum of 100 IID Poisson 1. ये हमने बहुत पहले देखा था कि Poisson lambda 1, Poisson lambda 2 independent, ये added together they will give you a Poisson lambda 1 plus lambda 2. ठीक है, so ये बहुत सारे 100 Poissons का sum है. ठीक है, so that means I can think of it as sum of 100 Poisson 1s, which means कि ये IID 100 Poisson ये जमा हो रहे हैं. So that means कि जो distribution होगी उनकी sum की, that will look like normal, and in fact Poisson with a reasonably high parameter, उसकी अगर shape देखें, उसको draw करें, that approximately looks like a normal, normal की तरह लगना शुरू हो जाती है. ठीक है, so इसको approximate कर देते हैं. So approximate S with X, where X is normal with the same mean and same variance as this guy. और Poisson का mean और variance क्या होता है? Mean भी उसका lambda होता है और variance भी उसकी lambda होती है. Mean और variance भी होता है. So approximate S with X, which is this, and then we can compute the required probability. I can compute this probability, but we have to keep in mind that S is discrete. So this means कि continuity correction करनी है. Continuity correction that we had seen in an earlier chapter, earlier topic. हमने जब binomial approximation की थी with normal, तो वहां पे हमने continuity correction देखी थी. यहाँ पे भी S is discrete, तो continuity correction करेंगे. So the probability that this guy S is greater than or equal to 120 is the same as probability X, which is normal guy, which is continuous, is greater than or equal to 119.5. 119.5. ये continuity correction इसमें की है, which is the same as the probability
that z, which is standard normal, is greater than or equal to 119.5, उसमें से उसका mean divide वो करें और square root of 100 से करें. So this will turn out to be जो भी आंसर निकलता है, जो भी आंसर निकलता है, ठीक है. ये इसको फाई के टेबल से देख लेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल से देख लेंगे. ओके, नाउ दिस क्वांटिटी हियर, ये जो हमने यहाँ ऊपर जिक्र किया था कि ये दिस क्वांटिटी x bar, this is called the sample mean. So I'm going to talk a little bit more about sample mean and variance and sample variance. Sample mean and sample variance. So let's say large population is considered, large population. You have a large population. उस large population में किसी एक चीज का mean mu है और variance is sigma square. True mean is mu, variance is sigma square. Large means infinite population, maybe, or maybe considered as infinite. यहाँ पे mean mu है और variance है sigma square. Variance है sigma square. ये कुछ भी चीज हो सकती है, height हो सकती है, लोगों की weights हो सकती हैं, कुछ और चीज हो सकती है, temperature measurement at many different points in a furnace हो सकती है. So could be anything, but it's a large population, very large population. Okay. हम उसमें से एक सैंपल लेते हैं. This could also be, by the way, the distance between Earth and Moon. उसके दरमियान एक डिस्टेंस है, उसको आप मेजर करते हैं. कभी एक मेजरमेंट आती है, कभी slightly different. You have many of these measurements. Okay. वो क्यों इस तरह से slightly different आती हैं? क्योंकि measurement error होती है आपकी. Now, from this large population, take a sample of size n. यानी आपने n उसमें से instances निकाल लिए, n random variables निकाल लिए. Take a sample of size n. So take a sample of size n means कि उसमें से extract करें x1, x2, ... up to xn, each of which is IID, mean mu and variance sigma square. उनकी भी mean mu है और variance sigma square है, for each of these x's. Okay? And then define the sample mean. Define the sample mean as x bar is equal to 1 over n summation of I is equal to 1 to n xi. And we have just seen previously the expected value of x bar is a random variable. So expected value of x bar is 1 over n sum of the expected value of each of these guys, which would be mu. Which means कि अगर कोई हमें ये कहे कि well, this is a large population, give me an estimate of the mean of this population. वो कहेंगे ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में आप बताएं कि लोगों की हाइट कितनी है, एवरेज हाइट बता दें. There is a true mean value. I cannot measure the heights of all the 7 point something billion people in the world. So I will take a small sample. मैं उसमें से n लोगों का एक सैंपल ले लूंगा, उनकी हाइट मालूम कर लेंगे, वो हाइट जो आएगी उनका एवरेज ले लेंगे, which would be the sample mean. और sample mean जो है, sample mean itself is a random variable. ये खुद से आपको म्यू के बराबर नहीं होगा, लेकिन expected value of x जो है वो म्यू के बराबर होगी, which means कि आपने एक सैंपल लिया, फिर दूसरा सैंपल लिया, फिर तीसरा सैंपल लिया. So the sample will converge to its mean. Law of large number हमें ये कहता है कि expected value की तरफ वो converge करेगा, which means कि it is reasonable to say कि जो आपके पास सैंपल आया है, x bar आया है, not expected value of x bar, जो आपके पास x bar आ गया है, so उस x bar को आप कहें यार this is a representative of mu, this is a good representative of mu. Okay? Don't forget कि अगर कोई और सैंपल आपके पास होता, मतलब आपने 100 लोगों का सैंपल लिया, 100 लोग रैंडमली सिलेक्टेड है, हो सकता है वो आपने कुछ थोड़े से टॉल सेलेक्ट कर लिए हो या थोड़े से शॉर्ट सेलेक्ट कर लिए हो, तो उनकी हाइट जो है वो टॉल या स्मॉल हो जाए. ओके, सो इन x bar जैसे since it's a random variable, it will take many different value depending upon whatever random sample is, what 100 people I am choosing. So उसकी expected value तो mu है, लेकिन random sample itself is a random variable.
जब मैंने रैंडम सैंपल पिक किया, उनकी एवरेज मैंने कंप्यूट की, कभी कुछ वैल्यू आएगी, कभी कुछ वैल्यू आएगी. ओके, depending upon our random sample. One random sample will give you one sample mean value, which itself is a random variable. Now, so expect x bar जो है can be treated as a good representative of mu. So अगर कोई मुझे कहे कि ये 7 बिलियन लोग हैं, 7 point something billion लोग in the world, उनमें से सबके मुझे वेट की या हाइट की या किसी चीज की एवरेज आप बताएं. So I can take a small sample, take the average of that would be the sample mean, and I will say, okay, this is a good estimate. This is my estimate. Okay, that would only be an estimate. That's not an accurate value. Obviously, if you increase the size of the sample, ये n जो है यहाँ पर, ये जो n है, इसको हम increase करते जाएं, इस n को increase करते जाएं, so that you cover the entire population of the world, तो फिर आपको accurate answer मिल जाएगा. इस n को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, accuracy बढ़ती जाएगी. और कैसे बढ़ती जाएगी, हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम कि वेरिएंस ऑफ x बार इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर. ये 1 ओवर n है तो 1 ओवर n स्क्वायर, sum of the variance of the sum is sum of the variances because these are independent. So this would be sigma square. So you can notice कि जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे x बार की वेरिएंस कम होती जाती है. इसका मतलब छोटा अगर n होगा तो देयर इज x बार की वेरिएंस बहुत ज्यादा होगी. तो जो मैंने आंसर दिया होगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसके ऊपर. अगर मैं 100 लोगों की एवरेज हाइट निकाल लूं, I can tell you that this is probably similar to the average height of the entire world, but my confidence would not be as high if I had taken 100,000 people. If I had taken 100,000 people, I would be more confident about my answer. Okay. Any questions so far? Okay. We had also defined what we call sample variance, and the sample variance. Yes. Sir, is it the mu is the expected value? So I'm not sure what you are trying to say. Is mu the expected value? Mu is the expected value of something, height of the people, for example, for the entire population. Okay. See? Xi minus x bar whole square. Similar to the variation of definition of the variance, but ये एक यहाँ 1 over n minus 1 आ रहा है यहाँ पे, और instead of mean, I have sample mean subtracted from each individual value. This looks very similar to the definition of the variance. So we can show with some effort that expected value of s square is equal to sigma square, which means कि अगर कोई मुझे कहे कि यार ये आपके पास पॉपुलेशन है, this is a big population, the entire world, मुझे उनकी हाइट का मीन बता दें और वेरिएंस बता दें, तो अगर if I take a sample of some people, so x bar will give me a good representation, good estimate of the population mean. X bar, which is the sample mean, would be a good estimate of population mean. Okay. Similarly, the sample variance would be s square can be used as an estimate of population variance, जो true variance है आपकी. ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं कि ये रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस बताएं, तो आपको तो उसकी इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशंस चाहिए होंगी. अगर स्मॉल सैंपल उसमें से लेंगे, उससे वेरिएंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके पास एक एस्टिमेट ही आएगा, वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा. So we can take sample variance as a good estimate of the variance of the population. Why? Because the expected value of s square turns out to be equal to sigma square. ये हम शो कर देंगे. ये एक नोट जो हम शेयर करेंगे, अभी तक मुझे कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला, but today we'll share that. So there is a couple of steps. मुश्किल नहीं है, बहुत easy है.
वो हम करके ये शो कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, आज अभी क्लास के एंड पे अगर टाइम मिला तो तब भी शो करते हैं. So I'll give you an example here. I'll give you an example. And the example is, let's say there is a large population of workers. Large populations of workers. और ये शायद उनके weights हैं, जिसका mean है 167 and standard deviation है 27. या variance है 27 का square. ठीक है? This is population mean and population variance, true values. ठीक है? So अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या, from that large population I pick a small sample. ठीक है? 36 sample, 36 size का sample workers are chosen. अब इन 36 लोगों की अगर मैं हाइट निकालूं और उसमें से वेरिएंस निकालने की कोशिश करूं, तो that would not be equal to mu or sigma, but that can be used as an estimate. Okay. So x bar is calculated. इससे calculate कर लें, x bar is calculated. ठीक है? Find the probability कि ये जो आपने x bar मुझे बता दिया, ये 36 लोगों का वेट लिया और उसकी एवरेज बता दी, हो सकता है वो 167.9 आ जाए, हो सकता है 162 आ जाए, हो सकता है 175 आ जाए. ठीक है? It would be a random variable. It would be a random variable, and since this is a 36 size sample, I can consider that the distribution of x bar to be a normal distribution. Yeah. So the probability, I'm being asked the probability, what is your confidence in this value of x bar that you are quoting me? What is the probability that x bar is within 4 units of true mean, and the 4 units of true mean is 171. Okay, so within 4 units of true mean या population mean mu. So हमने क्या किया, एक population है जिसका mean mu है 167 and variance है 27 का स्क्वायर. ठीक है? उसमें से हमने 36 साइज का एक सैंपल लिया और उनसे मीन कैलकुलेट कर दिया. ठीक है? एंड दैट वुड बी अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास हमने जो सैंपल पिक किया, इट्स अ रैंडम सैंपल. हो सकता है कुछ भी आंसर निकल सकता है, 160 निकल सकता है, 170 निकल सकता है, 180 निकल सकता है, कुछ आंसर भी आ सकता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि योर आंसर, द आंसर from these 36 people जो आपने उनसे sample mean निकाला है, what is the probability that sample mean is between 163 and 167? We know that the expected value of x bar is equal to mu. ये होगी, हमेशा होगी. क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ज करेगी अपनी वैल्यू को, ये हमने शो भी कर दिया है. And at the same time, variance of x bar would be equal to sigma square over n, which is 27 square over 36. 27 square over 36. So that means the standard deviation of x bar would be equal to 27 by 6, which is 4.5. So the probability that x bar is between 163 and 171 is the same as the probability that 163 minus 167 over square root निकालेंगे, क्योंकि ये वेरिएंस से हमने पहले ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए. सो मीन उसका माइनस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, और x बार माइनस जो उसका मीन है उसको हमने माइनस किया, एंड द मीन ऑफ दैट इज 167 डिवाइडेड बाय द वेरिएंस स्क्वायर रूट विद स्टैंडर्ड डेविएशन. इससे किया इज इक्वल टू 171 minus 167 divided by 4.5. And what is this guy? What is this guy? Answers in the chat window. This guy is standard normal. So this would be equal to the probability. इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये आपके पास आता है -0.889 less than equal to z less than equal to 889. Okay, and then you can calculate this. This would be equal to phi of 0.889 minus phi of minus 0.889, okay, which would be equal to, this would be 1 minus phi of
0.8889. So this would become 2 times phi of 0.8889 minus 1. And can be calculated. Table से इसको अगर look up करेंगे 0.6259 आपके पास आंसर. ये सवाल अभी खत्म नहीं करते. Let's make some change. Okay. Let's increase the sample size. Increase sample size to 144. Sample size आपके बड़ा होगा. ठीक है. I am interested in the probability, same probability कि 163 is less than equal to x bar is less than equal to 171. ये बताएं कि ये probability that your x bar जो अभी आपने मुझे आंसर दिया है from this 144 sample, जो आपने आंसर दिया है, जो पहले आपने 36 के सैंपल के साथ दिया था, जो पहले 36 के सैंपल के साथ दिया था, अब आपने 144 के सैंपल के साथ दिया है. आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी कि दिस आंसर दैट यू हैव जस्ट गिवन मी फ्रॉम 144 सैंपल, दिस आंसर is within 4 units of the true mean, is within 4 units of the true mean. This probability, is this probability going to be smaller than 0.6259 or larger than 0.6259? क्या कॉन्फिडेंस होगा आपका कि smaller or larger? Answers in the chat window. Smaller or larger, दो ही आंसर हो सकते हैं. I would like everyone to answer smaller or larger. Answers in the chat window. I'm waiting before we move forward. This would be larger. This would be larger because you will be more confident. ये देखें, x बार जो है आपको बताया था कि जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा करते जाएंगे आप उतना ज्यादा प्रिसाइज होते जाएंगे ट्रू मीन की तरफ. ठीक है. अगर आपने पूरी के पूरे वर्कर की पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द वर्कर पॉपुलेशन, सबको आपने सैंपल कर लिया, ठीक है, एन आपका इनफाइनाइट हो गया, तो एक्स बार जो है आपके पास आपको ट्रू वैल्यू दे देगा, वो रैंडम वेरिएबल ही नहीं रहेगा, उसकी वेरिएंस 0 हो जाएगी क्योंकि उसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है, तो उसकी वेरिएंस 0 हो जाएगी. वेरिएंस 0 हो जाएगी तो इट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू द ट्रू मीन अगर एक्स बार आपने फुल कर दी. सो दैट मींस कि 163 और 171 के बीच में तो वो एग्जैक्टली वो उसके दरमियान में होगा, 167 पे होगा. हाँ, सैंपल साइज कम करते जाएंगे तो उसकी वेरिएंस इंक्रीज होती जाएगी. सो दैट मींस the size of the distribution between 163 and 171 would be decreasing with the decreasing sample size. Okay. So now I am again interested in the probability that 163 is less than equal to x bar is less than equal to 171. This is equal to the probability. इसमें से माइनस कर देते हैं 163 minus 167 divided by, now the standard deviation, expected value of x bar is still the same. ये अभी भी हमारे पास ये 167 ही रहेगी. However, the standard deviation has decreased. STD of x bar now would be equal to, instead of 27 square over 36 वेरिएंस के बजाय अब आपके पास हो जाएगी 27 divided by ये 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 is 2.25. So this would be equal to 2.25 less than equal to, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले किया. So this is standard normal, z less than equal to 171 minus 167 over 2.25, which turns out to be probability minus 1.778 less than equal to z is less than equal to 1.778, which turns out to be 0.9246. So जैसे सबने guess किया था कि ये larger होनी चाहिए, and it is larger. I am more confident कि x bar will lie within this boundary. अगर और sample size बड़ा कर देंगे तो ये मेरा confidence और बढ़ता जाएगा, probability और बढ़ती जाएगी. Okay. So now I am going to talk about the estimation of the parameters from the samples. Estimation of population parameter. देखें जैसे हमने यहाँ पे अभी कहा था कि ये x बार जो आप निकालते हैं, this can be used as a good estimate of mu, which is the population mean. Okay, so let's just generalize that topic. So estimating population parameters from samples. पूरी population को हम
नहीं मेजर कर सकते, हम कुछ सैंपल्स ले लेंगे उसमें, ठीक है। सो सबसे पहले लेट म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। ये पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस है, ट्रू मीन एंड वेरिएंस। हमने एस्टिमेट करना है कि वो क्या है। सो get a sample x1 x2 dot 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 up to xn with sample mean x bar to be equal to 1 over n summation I is equal to 1 to n xi. Okay, we know that expected value of x bar is equal to mu and variance of x bar is equal to sigma square over n. ये भी हमें पता है। हमें और भी क्या चीज पता है कि x bar minus mu over sigma divided by square root of n, this is approximately equal to the standard normal distribution. x bar में से उसका मीन माइनस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। Furthermore, sample variance इसका भी हमें पता है कि sample variance is 1 over n minus 1 summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square, and expected value of s square is equal to sigma square, population variance. We can also show, अभी शो नहीं करेंगे, can also show that for normal population, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, for normal population s square and x bar are independent. ये भी शो कर सकते हैं। I'm going to make a claim here, and the claim is n minus 1 s square divided by sigma square. This is a quantity जिसमें n minus 1 is a constant, जितना आपका sample size था उससे एक कम। Sigma square, which is the population variance, is also a constant. The only variable here is s square, this guy s square. ये एक variable है आपके पास, ये random variable है। S square is a random variable, So a random variable multiplied with some constant is also a random variable. Function of a random variable is also a random variable. So this is a random variable. This entire thing is a random variable. Claim is that this has a chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. If you recall कि chi-square distribution क्या होती थी? Chi-n square distribution होती थी z1 square plus z2 square plus dot 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 up to zn square, where zi's are normal 0 1 IID, independent and identically distributed. उनका sum of squares अगर आप ले लें, ये chi-square distribution होती थी. And if you might recall, what was the expected value of chi-n square? Chi-n square की expected value थी n. Variance of chi-n square was equal to 2n. ये किसी एक होमवर्क प्रॉब्लम के अंदर भी हमने किया। So ये जो हमारा क्लेम है कि n minus 1 s square over sigma square has a chi-n square distribution, ये इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। And the proof is कि consider this, जो ये I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square जो आता है, ये s square की डेफिनेशन में आता है, ये सैंपल वेरिएंस की डेफिनेशन में आता है, ये वाली टर्म जिसको हम n minus 1 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। So this guy here, ये मैंने क्यों कंसीडर किया? ये मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि मुझे पता है कि s स्क्वायर के साथ अगर मैं ये n minus 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट वुड बी दिस गाय। सो इसको कंसीडर करें जरा। सो कंसीडर this guy is to be equal to, इसको हम लिख सकते हैं summation I is equal to 1 to n xi minus mu plus mu minus x bar whole square, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है।
कुछ भी नहीं किया, बस म्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. बट now I can break it up into two terms. I can break it up into this guy plus this guy whole squared. This guy plus this guy whole squared. So इसको अगर हम sigma I is equal to 1 to n, इसको करें xi minus mu whole square plus इसको कर दें x bar minus mu whole square minus 2 xi minus mu x bar minus mu. Okay. So ये अगर इसको mu minus x bar करेंगे तो ये plus 2 हो जाएगा. But yeah, this is the expansion. And now this entire thing is under the summation. This entire thing is under the summation. ये पूरी की पूरी जो चीज है, this is under the summation. So इसका मतलब है मैं अब ये तीन टर्म्स हैं, समेशन को मैं इन तीनों टर्म्स के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर देता हूँ. सिग्मा I is equal to 1 to n xi minus mu whole square, xi minus mu whole square plus summation I is equal to 1 to n x bar minus mu whole square, x bar minus mu whole square, okay, minus 2 times summation I is equal to 1 to n xi minus mu x bar minus mu. Now think of it कि ये जो पहली वाली टर्म है, आपके पास, this term is, I will keep it as it is, I is equal to 1 to n xi minus mu whole square. ये वाली जो टर्म है इसके अंदर कोई I नहीं रहा, कोई there is no I here. So this is just n times x bar minus mu whole square. ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म is just this, क्योंकि उसके अंदर वाली टर्म में समेशन के अंदर तो कहीं पे I है ही नहीं. इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2. अगेन इसमें भी ये x बार माइनस म्यू जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको x बार माइनस म्यू को मैं वैसे ही बाहर निकाल देता हूँ. समेशन ऑफ I is equal to 1 to n xi minus mu, xi minus mu. So this would be equal to xi minus mu. This would simply be equal to I is equal to 1 to n xi minus mu whole square plus n times x bar minus mu whole square minus 2 x bar minus mu, and this would be equal to n times x bar minus mu. ये x bar की डेफिनेशन से आपके पास this term would be equal to n times x bar minus mu. So ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये तो ऐड हो सकते हैं. So this would be equal to summation I is equal to 1 to n xi minus mu whole square plus another term which is minus 2n x bar minus mu whole square or plus 1n x bar minus mu whole square. So this would actually be negative n times x bar minus mu whole square. By the way, इसी प्रोसीजर को यूज करके हम शो कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, सैंपल वेरिएंस का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसी को यूज करके शो कर सकते हैं कि दैट वुड टर्न आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. बाद में अगर क्लास के एंड पे टाइम मिला तो हम वो भी दिखा देंगे, ठीक है. बट what we have shown here is the following कि this guy here on the left side, this guy here, this guy is equal to this guy minus this guy. ये चीज हमने शो कर दी. ऐसा करते हैं कि इस सब को जरा डिवाइड करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ. So what I'm getting here is summation I is equal to 1 to n xi minus x bar, xi minus x bar
whole square over sigma square is equal to 1 over sigma square summation I is equal to 1 to n xi minus mu whole square minus n over sigma square x bar minus mu whole square. टर्म्स जरा थोड़ी सी चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 over sigma square summation I is equal to 1 to n xi minus mu whole square, this guy here is equal to, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, is equal to 1 over sigma square I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square plus n over sigma square. इसको मैं जरा थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ, x bar minus mu whole square. कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टर्म्स जो है वो लेफ्ट, ये राइट वाली टर्म ये जो सर्कल में है इसको उठा के हम लेफ्ट वाली साइड पे ले गए और वो साइड चेंज कर दें. That's it. ये हमने कुछ भी नहीं किया इसके अलावा. ठीक है. Now focus on this thing. Focus on the first term on the left. ये वाली टर्म क्या चीज है? So x bar xi minus mu over sigma whole squared. ये क्या चीज है? Answers in the chat window if someone can recognize that. कि xi देखें, recall कि xi was IIDs थे आपके पास, IIDs थे with mean mu and variance sigma square. And variance sigma square. Yeah. And variance sigma square. And these were normal. These were normal. ये हम normal population की बात कर रहे हैं. So xi minus mu इसको हम लिख सकते हैं, ये लेफ्ट वाली साइड को हम लिख सकते हैं कि I is equal to 1 to n xi minus mu over sigma whole square. इस पे किसी को इतराज है? Okay. Do we recognize this? Okay, what is this? सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर जो टर्म है वो क्या चीज है? ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है ये क्या चीज है? This guy here. What is this guy? Xi minus mu over sigma. What is this guy? Answers in the chat window. नॉर्मल तो xi भी है उस्मान साहब, नॉर्मल तो xi भी है. xi is normal with mean mu and variance sigma square. Normal with mean mu, variance sigma square. लेकिन देखें कोई एडिशनल कोई चीज है. This is standard normal. This is standard normal which we call as z. ठीक है. So standard normal और ये ऊपर इसके स्क्वायर भी हो रहा है. स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर हो रहा है और n स्टैंडर्ड नॉर्मल्स का स्क्वायर है which are IIDs. So sum of the squares of n standard normals, ये हमने ऊपर ये डिफाइन किया था chi square डिस्ट्रीब्यूशन को. Sum of the squares of n standard normals is chi n square distribution. So this guy here is nothing but a chi n square distribution. This chi n square distribution is equal to this guy here, ठीक है, this guy here plus ठीक है. इसको भी मैं रीअरेंज करके लिखता हूं x bar minus mu, इसको मैं लिखता हूं x bar mu over sigma over square root of n whole square. लिख सकते हैं ना? And what is this guy? What is this guy? सबसे पहले रियलाइज करें कि x बार जो है, x बार भी नॉर्मल है, उसका मीन म्यू है, उसकी वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर ओवर n. सो मैंने क्या किया, x बार में से उसका मीन माइनस किया और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये नॉर्मल आ गया, उसका स्क्वायर किया. अगर एक सिंगल नॉर्मल हो उसका स्क्वायर करें तो इट्स z1 स्क्वायर. सो व्हिच मींस इट्स chi1 स्क्वायर, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन with 1 degrees of freedom. Chi square distribution with 1 degrees of freedom. If you notice कि ये जो chi square distribution है, इसमें आपके पास chi n square distribution में आपके पास n zi squares होते हैं. chi n minus 1 में क्या होगा, आपके पास एक n minus 1 निकल जाएगा उसमें से. So really what you have here is chi n minus 1 square distribution, and that's the proof. The chi n minus 1 square distribution. So this guy has a chi n minus 1 square distribution. यही हमने कहा था.
कि n-1 s square over sigma, which is this guy, okay, 1 over sigma square I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square is chi n minus 1 square. But this guy here is, इसके साथ multiply divide करते हैं n-1 के साथ, n-1 के साथ multiply, n-1 के साथ divide, तो ये this guy divided by ये n-1 ये s square बन गया. So this means n-1 s square over sigma square has a chi n square minus 1 distribution. I'll give a quick example here. Quick example. So example is CPU time to complete execution of a computer program, to complete a job, is normal, mean mu, and variance 9. Variance 9. Okay. So sample of 15 jobs is taken. Is 15 jobs is taken. So probability that sample variance s square is greater than 12. What is that probability? So n is equal to 15 samples. N is equal to 15 samples. We know कि n-1 हमें पता है कि 14 times s square divided by sigma square, which is 9, okay, has chi square distribution with 14 degrees of freedom, chi square n-1. Yeah. So probability of s square being greater than 12, I can write it as equal to the probability 14 times s square over 9 is greater than 14 times 12 over 9. ऐसे लिख सकते हैं. And what is this guy here? This guy here is chi square with 14 degrees of freedom. Chi square with 14 degrees of freedom is greater than this quantity turns out to be 18.67. Okay. And this probability chi square distribution, इसके भी tables मिलती हैं with different degrees of freedom. So ये online tool से आप देखें. So this turns out to be 0.1779. So now I'm going to introduce a new distribution. It's called student T distribution. Student T distribution. What is a student T distribution? Student T distribution is defined as the following. Okay, you have a standard normal distribution. You divide that by square root of a chi n square distribution divided by n. This distribution is called Tn. This is student T distribution with n degrees of freedom. N degrees of freedom. जैसे जैसे degrees of freedom बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे chi square distribution normal बनती जाएगी. Similarly, T distribution भी normal को approximate करती जाएगी. And the theorem here is, the claim is कि x bar minus mu divided by, anyone recall कि sigma over square root of n? What is this distribution? Anyone recalls कि ये क्या distribution है? So x bar जिसका मीन mu होता है, उसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर n होती है. तो अगर उसमें से उसका मीन माइनस कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें, this would be a standard normal distribution. But वो तो मेरा कोई क्लेम नहीं है. क्लेम असल में ये है कि अगर यहाँ सिग्मा की जगह पे यहाँ पे मैं s लिख देता हूँ, सिग्मा की जगह पे s लिख देता हूँ, the claim is कि this distribution is Tn-1 distribution. Is Tn-1 distribution, T distribution with n-1 degrees of freedom. Proof के लिए बुक देख लें कोई, या ये हमने नोट्स में बुक किया है. नोट्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इसका प्रूफ. 2 लाइन का प्रूफ है, बट आई विल अवॉइड दैट. Leave that as an exercise. Now I'm going to talk about interval estimates. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें,
You have a large population and from that large population you take a sample. उस sample का आप mean निकाल लेते हैं और उस sample में से you can actually calculate the sample variance as well. आप sample variance भी calculate कर सकते हैं. Now the question is कि how good is your estimate of mean? How good is your estimate of the variance? कितने good estimates हैं? And those interval estimates ये हमें बता देंगे कि what is the confidence interval, what is the confidence level of that. ठीक है? So let's say you sample a large population, a normal population. जब population कहते हैं इसका यही मतलब होता है कि very large है, infinite. ठीक है? We know that कि x bar minus mu over sigma square root of n, this is standard normal distribution. ये हमें पता है. ठीक है? Also know कि if you have a standard normal distribution with mean 0 and variance 1. So let's say कि if I am interested in this center area, मैं इस center वाले area के अंदर interested हूँ, and this center area, I want this area to be equal to 95% of the whole distribution. Let's say 95, 90 भी कर सकते हैं, 99 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? And this is symmetric, so that this area plus this area is the remaining 0.05. So this would be 0.025 and this would also be 0.025. ये जो areas आपके पास आएंगे, ये red shaded जो area 0.025 है, ये red shaded area also 0.025. तो देख लें, तीनों को sum करें तो आपके पास 100 आ जाता है. Okay. So if this is a standard normal distribution, the question is कि what is this point and what is this point? ये points क्या है? We know from the table से look up करें अगर कि probability of minus 1.96 is less than equal to z is less than equal to 1.96. This is equal to 0.95, approximately equal to 0.95. ठीक है? ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि ये phi का जो z का जो टेबल है जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें रिवर्स लुकअप करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेबल, रिवर्स लुकअप ऑफ द टेबल. ठीक है, आप जाके देख लें, वहां पे चेक कर लें. phi of 1.96 माइनस phi of minus 1.96 वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.95 आ जाएगा. ठीक है, बट देन आई कैन आल्सो राइट इज के द प्रोबेबिलिटी minus 1.96 less than, इस z की जगह पे मैं ये सब लिख देता हूँ. x bar minus mu over sigma over square root of n is less than plus 1.96 and this is equal to approximately 0.95. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, देखिए एक ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है कि x bar minus mu over sigma over square root of n greater than minus 1.96, और एक आपके पास ये दूसरी एक्सप्रेशन है which is x bar minus mu over sigma over square root of n less than 1.96. Okay, so मैं इसको जरा रीअरेंज करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ कि ये minus 1.96 is less than x bar minus mu over sigma over square root of n. तो जरा ऐसे करते हैं कि इसको स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n को उधर लेके चले जाते हैं. सो minus 1.96 sigma over square root n would be less than x bar minus mu. इसको हम लिख सकते हैं कि mu is less than x bar plus 1.96 sigma over square root of n. ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट की है इसकी कुछ. ठीक है, सो mu is less than this guy. सो ये जो लेफ्ट वाली जो लिमिट थी हमारे पास, इससे हमें ये पता चला कि mu is less than x bar plus 1.96 sigma over square root of n. इसी तरह ये राइट वाली चीज से हमें इसकी लोअर लिमिट पता चल जाएगी, x bar minus 1.96 sigma over square root of n. This is equal to 0.95.
what this tells us कि mu is between this guy and this guy with probability 0.95, which means कि 95% of the time, 95% of the time, mu will be in this interval. किस interval? X bar minus 1.96 sigma over square root of n, comma x bar plus 1.96 sigma over square root of n. Now हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल में से हम x बार कैलकुलेट करेंगे. Let's assume for a moment कि sigma is known to us. Let's assume for a moment. ठीक है, सिग्मा अगर हमें पता है तो हमारे पास ये x बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n भी हमें पता है, तो हमारे पास एक नंबर इधर आ जाएगा, एक नंबर इधर आ जाएगा. हम कहेंगे कि ये this value of x bar that I am giving you, I am 95% sure, I am 95% confident that x bar minus जो भी है, माइनस करके जो भी नंबर आता है और प्लस करके जो भी नंबर आता है, कि the value of x bar that I am giving you, your actual mu, the true mu, the population mu lies between this interval. I am 95% confident of that. I'm 95% confident of that. So this is called the two-sided confidence interval. इस तरह एक one-sided confidence interval भी define कर सकते हैं. वो कैसे define कर सकते हैं? वो ऐसे define कर सकते हैं, we know कि probability that z standard normal less than 1.645 is approximately equal to 0.95. So ये आपके पास standard normal की distribution है, और standard normal की distribution के अंदर ये 1.645, इससे जो ये पीछे का जो एरिया होता है सारा all the way to minus infinity, this guy is 95% और 0.95. So इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं, probability x bar minus mu over sigma over square root of n less than 1.645 is equal to 0.95, और इसमें से हम निकाल सकते हैं कि probability that x bar minus 1.645 sigma over square root of n greater than mu is equal to 0.95. ये तो हमने 95% कॉन्फिडेंस के लिए निकाला है ना, 90% कॉन्फिडेंस के लिए भी निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली ये 1.96 की जगह कुछ और वैल्यू आ जाएगी, या 1.645 की जगह कुछ और वैल्यू आ जाएगी. 99% कॉन्फिडेंस के लिए भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, सो अभी तक हमने ये assumption की है कि ये जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है, इसमें हमें ये सिग्मा पता होगा. अगर सिग्मा ना पता हो तो फिर क्या होगा? अगर सिग्मा ना पता हो तो फिर क्या होगा? What if sigma is not known? Which is normally the case. Can we use S, which is the sample variance का square root, instead of sigma? So the answer is yes. Otherwise मैंने ये सवाल ही नहीं पूछना था. So the answer is yes, but we have to be careful. क्यों? We have to be careful because हमें डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल रखना होगा. क्यों? हमें ये पता है कि x bar minus mu over sigma square root of n, this is a normal distribution, standard normal distribution. क्यों? क्योंकि x bar का जो मीन है हमने शो किया हुआ mu है, वेरिएंस उसकी सिग्मा स्क्वायर ओवर n है. मीन माइनस करें, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें, you will get normal 0, 1. But what is the distribution of x bar minus mu over s divided by square root of n? इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है x bar minus mu over s square root of n की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो t डिस्ट्रीब्यूशन है, is not z distribution, is not normal distribution, it's a t distribution with n minus 1 degrees of freedom. तो इस केस में हमें t डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना पड़ेगा. ये t डिस्ट्रीब्यूशन की सिमिलर है, नॉर्मल की तरह की होती है, बट नॉट द सेम. सो यहां पर भी अगेन उसी तरह से आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं. सो लेट्स से you want this area to be equal to
this area to be equal to 1 minus alpha. 1 minus alpha. ठीक है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, 5%, 1%, 10%. सो लेट्स से ये मुझे अगर 95% एरिया चाहिए था तो अल्फा वुड बी 5%. 5% का मतलब है कि यहाँ पे 2.5% ऑन द राइट एंड 2.5% ऑन द लेफ्ट. So this shaded area would be 2.5% and this shaded area would be another 2.5% अगर मुझे 95% चाहिए तो. So 1 minus alpha here. और साथ में what about this area? This would be equal to this area and this area. Shaded area जो है आपके पास alpha होगा. So alpha by 2 here and alpha by 2 here. T distribution is also a symmetric distribution. और यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट होगा, मुझे पता नहीं है वो क्या है. z के केस में हमने देखा था कि वो that was 1.96 for 95% इंटरवल. यहाँ पे कितना एरिया, यहाँ पे कितना होगा, इसको हम कहते हैं ये कांस्टेंट है t अल्फा बाय 2. अल्फा बाय 2 जो भी वैल्यू आती है सम कांस्टेंट, बट हमें डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी स्पेसिफाई करनी है, इसको कॉमा n minus 1 लिख देते हैं. एंड दिस वुड बी minus t alpha over 2 with n minus 1 degree of freedom. Now, I can write this probability. This guy has t n minus 1 distribution. So the probability that this guy x bar minus mu over s divided by n is between minus t alpha over 2 comma n minus 1 plus t alpha over 2 n minus 1. This probability would be equal to 1 minus alpha. वही 95% आप लिख सकते हैं इसको. These guys here, these guys ये वाला और ये वाला, these guys are constants. कहां से आएंगे ये constants आएंगे आपके पास t distribution से. For a given alpha, you can get it from the t distribution. T distribution के भी tables मिलते हैं. And we will upload those tables on LMS. So ये इसी expression से, जिस तरह हमने पहले नॉन वेरिएंस के केस में किया था, इसको हम लिख सकते हैं कि x बार माइनस s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n t alpha over 2 n minus 1 alpha over 2 n minus 1 and x bar plus s over square root of n t alpha over 2 n minus 1 is the confidence interval. For mu to lie in this. 1 minus alpha percent of the time, your mu will lie in this. अगर वेरिएंस आपको नहीं पता है, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के साथ बहुत क्लियर होगा. So let's say we have this example. The example is okay, let's say you are sending some signal, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहे हैं x और आपको रिसीव हो रहा है y रिसीव हो रहा है क्योंकि दरमियान में कुछ नॉइज ऐड हो जाता है n, ये नॉइज ऐड हो जाता है n, and this noise n is normally distributed with mean 0 and variance 4. ठीक है. So let's say कि जो x है आपके पास, x है वो आपके पास म्यू है, जो आप भेज रहे हैं वहां से वो आपके पास म्यू है. इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो भी म्यू है. एक्सपेक्टेड वैल्यू x जो है वो भी म्यू. नॉइज n is normal 0.4. Let's send x 10 times. 10 दफा भेजते हैं उसको, ठीक है, and measure y.
y को मेजर करते हैं, हर दफा उसके अंदर कुछ नॉइज ऐड हो जाएगा, हर दफा उसके अंदर कुछ नॉइज ऐड हो जाएगा. सो लेट्स से मुझे पता नहीं है कि ये अभी x क्या है, मुझे पता नहीं है ये क्या है, लेकिन ये मुझे पता है कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू शायद ये आ जाएगी, ये उसकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, विच वी आल्सो डोंट नो, वी डोंट नो अबाउट म्यू. हमने म्यू का ही तो एस्टिमेट निकालना है, सो हमने म्यू का एस्टिमेट निकालना है. सो यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग इज कि यू आर सेंडिंग अ सिग्नल, you don't know what the magnitude of that signal is, कितनी वोल्टेज आप यहाँ से भेज रहे हैं या कितनी पावर आप यहाँ से भेज रहे हैं. हाँ ये मुझे पता है उसमें कुछ नॉइज ऐड हो जाता है. I can measure y and I can measure y. Let's say you measure y and your measurements are 5, 8.5, 12, 15, 7, 9, 7.5, 6.5 and 10.5. ये आपके पास measurements आ गए. इन सारी measurements ये आपके पास 10 का sample size आ गया है, 9 का sample size आ गया है. आपसे पूछा जा रहा है कि what is this mu? What is this mu? Tell us this mu. ठीक है, आपको पता है कि आपको म्यू नहीं मिल रहा, उसके अंदर एक नॉइज ऐड होता आ रहा है, ठीक है, बट व्हाट इज दिस न्यू म्यू. सो सबसे पहले तो हम सैंपल मीन निकालते हैं. सैंपल मीन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इटसेल्फ. द सैंपल मीन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इटसेल्फ, व्हिच इज y bar is equal to 1/9 sigma I is equal to 1 to 9 by I. इन सब को ऐड करें, इन सब को ऐड करें और 9 से डिवाइड कर दें, ठीक है. This would be equal to, इन सबको ऐड करें तो 81 आता है आपके पास. 9 is 9, ये 9 आता है. So now the question is, what is your 95% confidence interval? What is your 95% confidence interval? So your 95% confidence interval would be, your 95% confidence interval would be, ये अभी ऊपर हमने लिखा, your 95% confidence interval would be this. इसको हम ऐसा करते हैं कि यहां से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है. दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस. ये 1.96 भी एक्चुअली 95% के लिए ही हमने निकाला था. अगर 95% ना होता, 90% होता, तो ये 1.96 की जगह कुछ और होता, ठीक है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. Now you know the variance. Now you know the variance of y. You know the variance of y. क्यों? क्योंकि आपको पता है ये नॉइज जो ऐड हो रहा है यहाँ पे वो नॉर्मल 0.4 है, वो नॉर्मल 0.4 है. You know the variance of y. Sigma is known. So the 95% confidence interval would be x bar, which is 9 minus 1.96 times sigma, which is 2. Sigma is 2 divided by square root of 9. Square root of 9. Square root of n हमने किया. 9 plus 1.96 times 2 over square root of 9. This is your 95% confidence interval, which means that your mu, your true mu, your true x will lie within this interval 95% of the time. And this interval turns out to be equal to 7.69 to 10.31. What is 99% confidence interval? 99% कॉन्फिडेंस अगर आपने लाना हो कि उस रेंज के अंदर है, that range will be larger than this or smaller than this. Larger or smaller? Answers in the chat window. I am 95% sure कि इस रेंज के अंदर आपका ट्रू म्यू लाई करता है. I want to be 99% sure कि किसी एक रेंज में जो है वो आपका ट्रू म्यू लाई करे. Would that range be larger or smaller? Larger or smaller? Answers in the chat window. Larger. अगर हमने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है तो हमें रेंज बड़ी करनी पड़ेगी, So range would be larger.
So instead of 1.96, you would end up getting 9 minus 2.58, और ये 2.58 कहां से आया? ये भी स्टैंडर्ड डिजी के टेबल से ही आया आपके पास, ठीक है। 0.01 डिवाइडेड बाय 2, उसका रिवर्स लुकअप करेंगे तो आपके पास ये 2.58 आएगा। So this would be multiplied by 2 divided by square root of 9, comma 9 plus 2.58 times 2 divided by square root of 9, which turns out to be equal to 9 plus minus 1.72, ठीक है, और ये 10.72 और 7.28. So you can see that this interval is bigger than this, larger. ये वो वाला केस है जब हमें वेरिएंस पता थी। एक वो भी केस देख लेते हैं जब वेरिएंस नहीं पता। सर यस सर ये 2.58 किस तरह है, इसको रिपीट कर देना। ये बाद में अभी रिपीट करेंगे, ये टेबल से आ जाएगा। जिस तरह से 1.96 आया था बिल्कुल उसी तरह से 2.58 भी आ जाएगा। 1.96 आया था उसके लिए आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए था, 2.58 आता है अगर आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, ठीक है। अगर बाद में टाइम बचते तो हम ये रिपीट कर देंगे उसको। सो व्हाट इफ सिग्मा इज नॉट नोन, आपको पता नहीं है कि ये नॉइज जो ऐड हो रहा है उसकी वेरिएंस कितनी है। हमें फिर भी ये पता है कि वाई बार जो है जो आपको रिसीव हो रहा है उसका सैंपल मीन मैं फिर भी निकाल सकता हूँ, ओके। सैंपल मीन मैं फिर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे वेरिएंस का, पॉपुलेशन वेरिएंस का नहीं पता, मुझे पॉपुलेशन वेरिएंस का नहीं पता। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंप्यूट द सैंपल वेरिएंस। I can compute the sample variance, which is 1 over n minus 1, 1 over 9 minus 1, summation I is equal to 1 to 9 by I square minus by I bar. गलत हो गया ऐसे, so this will turn out to be equal to 9.5, which means कि S is 3.082. What is 95% confidence interval for unknown variance? Unknown variance के केस के लिए अब आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? नाउ somebody again tell me कि now if you want to be 95% sure, अब ये जो आपका इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इस वाले 95% से जो मेरे पास 7.69 और 10.31 था, इससे बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? पहले केस में मुझे वेरिएंस का पता था, अब मुझे वेरिएंस का नहीं पता। So should this be larger or smaller? I want to be 95% sure. This would be larger. क्योंकि मेरे पास कम इंफॉर्मेशन है, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो मेरे पास ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। So this would be larger. So यूज करते हैं from T tables, from T distribution tables, T distribution के टेबल से T.025 which is 95% में से जो बच जाता है 5%, उसको 2 से डिवाइड करें तो वो ये आता है आपके पास 8 and minus 1 degrees of freedom is 2.306. Then the 95% confidence interval for mean is 9 minus 2.306 into 3.082. ये अब मैंने देखें यहाँ पे वेरिएंस की जगह पे मैंने ये S इस्तेमाल कर दिया। This S is used instead of the variance. सैंपल वेरिएंस की जगह पे मुझे ये स्टैंडर्ड S सिग्मा की जगह S यूज कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, वो 9 का स्क्वायर रूट है इनफैक्ट, 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है, कॉमा
9 plus the same guy. And this turns out to be equal to 6.63 से 1137. जो वेरिएंस नहीं पता तो मुझे अगर अभी भी 95% श्योर होना है तो I need to expand this. So but if the underlying population is not Gaussian, अगर वो Gaussian नहीं है तो फिर क्या होगा? And this is being asked in the last problem in the homework, जो ऑप्शनल प्रॉब्लम है बाय द वे. उसके अंदर अगर नहीं है हमारे पास Gaussian population, if population not Gaussian, अगर वो normal population नहीं है, if population is not Gaussian, in this case we can consider batches of samples. बहुत सारे बैचेस बना लेंगे. So 150 सैंपल्स लेते हैं जिसमें से आप 15 के 10 बैचेस बना लें. So each of the batch, क्योंकि उसके अंदर 15 सैंपल्स हैं, वहां पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे, उसको हम फोर्सफुली नॉर्मल बना देंगे. So पॉपुलेशन आल्दो के नॉर्मल नहीं थी लेकिन हम उसको नॉर्मल बना देंगे. So now ये जो अभी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है, दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू. Similarly, we can find the confidence interval for variance. Population की जो variance है जो हमें नहीं भी पता होगी, अक्सर नहीं पता होगी. Just like x bar is a random variable, the s square is also a random variable. So अगर मैं x bar is an estimate of mu. So mu is estimated by x bar, and the word estimated is important क्योंकि वो exact value नहीं बता रहा, सिर्फ estimate आ रहा है आपके पास और उसमें हम confidence भी बताते हैं. ठीक है. So similarly mu is estimated by this. So sigma square is estimated by s square, which is the sample variance. सैंपल जब हम भी लेंगे तो x बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, s स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हमने किया ही है ऊपर, ये हमने s स्क्वायर कैलकुलेट किया ही है. ठीक है. सो हम s स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x बार भी. तो वो एस्टिमेट्स का काम करेंगे म्यू और सिग्मा स्क्वायर के लिए. जिस तरह x बार के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल थे, उसी तरह s स्क्वायर के लिए भी कॉन्फिडेंस इंटरवल. इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे? इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हम कंसिडर n-1 s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर. ये अभी हमने शो किया था, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इसका मतलब है कि 1 minus alpha into 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको 95 बना सकते हैं अल्फा की अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज करके. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर is obtained from the probability that chi square 1 minus alpha over 2 n-1 degrees of freedom is less than equal to n-1 s square over sigma square is less than equal to chi square alpha over 2 with n-1 degrees of freedom. Once again, यहाँ पे कैसे chi square distribution is not symmetric. So यहाँ पे basically हमारे पास chi square distribution will look something like this. इस तरह. तो इसमें हमारे पास कुछ एरिया यहाँ पे आएगा और कुछ एरिया यहाँ पे आएगा. सो ये एरिया जो ब्लैक हुआ है राइट पे और ये जो रेड हुआ है लेफ्ट पे, these areas would be the same. And this guy here, and this guy here, this is this guy. ये एक कांस्टेंट है बिल्कुल इसी तरह से जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में था. And similarly this guy here is this guy. So there is an example which is done in the notes. Please take a look at that. By the way, these estimators, mu के estimator और sigma square के estimator, x bar और s
square ये काम करते हैं. These are called point estimators. Both of these estimators are called point estimators because they use a single value. Because they use a single value as the estimate. एक single value को हम use करते हैं as an estimate. हमने एक parameter estimate करना है, उसके लिए हम इस single value estimate करेंगे, and the single value is computed from all the sample points that we have observed. From all the sample points that we have observed. A summary of this is given in the notes that we will share today. Okay. If there is any question, I will be happy to answer before closing the session. ये किसी का क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है ये 2.58 वाला क्वेश्चन था. Yeah. So what is 99% confidence interval? 99% confidence interval का मतलब है कि आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि you have to consider a normal population. यहाँ पे let me draw it here. यहाँ पे draw करो. So I'm saying कि 99% confidence interval, which means कि ये और ये point यहाँ पे 99% होनी चाहिए. So यहाँ पर और यहाँ पर कितने परसेंट होगी? So 1% in both of these. So which means कि 0.5% here and 0.5% here. ठीक है? 0.5% here and 0.5% here. Which means कि ये वाला जो एरिया जो मैं ग्रीन शेड कर रहा हूँ अभी, ये ग्रीन जो शेड कर रहा हूँ, this area would be equal to 0.005. So what that means is कि ये जो नॉन शेडेड एरिया है, नॉन शेडेड एरिया जो है, जिसको अब मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ रेड कर देता हूँ, ये सारा एरिया, ये all the way to minus infinity. This red area would be 1 minus 0.005. So ये जो रेड एरिया होगा आपके पास, ये हो जाएगा 0.995. इसका रिवर्स लुकअप करें जी टेबल में, you will get your answer as 2.58. ये आपको 2.58 वहां से मिल जाएगा. Any other question? If there is any other question before we close the session. कोई question? No question? Okay, we will share the video as soon as it is available and upload the notes as well sometimes later today. Okay. Sharing off and closing the session now.